गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से आज का प्रैक्टिस लेक्चर 13। तो आज 13th प्रैक्टिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न को जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और आज का फर्स्ट प्रश्न है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन प्लासेंटा। Give region placenta is extremely essential for fetal development. प्लासेंटा जो है बहुत ही एसेंशियल है fetal development के लिए। मतलब कि fetal development नवजात शिशु के डेवलपमेंट के लिए placenta is very essential. The reason you have to provide reason for this question कि placenta is essential for fetal development. Second is यूटेराइन लाइनिंग, मतलब यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक, यूटेराइन लाइनिंग थिक हो जाते हैं स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेराइन लाइन जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। यू सी द फॉइटस, दैट इज हियर फॉइटल डेवलपमेंट, ये यूट्रस का जो लाइनिंग है वो हो जाता है थिक एंड स्पॉन्जी। सेकेंड क्वेश्चन में दिस यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तो बच्चों हियर इज ओवरी एंड हियर इज फैलोपियन ट्यूब। दैट इज जस्ट जनरल, हम फिगर उसका एलाबोरेट कर रहे हैं दिस। तो बच्चों यहां व्हाट इज सेइंग दैट कि प्लासेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फॉइटल डेवलपमेंट। फॉइटस के डेवलपमेंट के लिए प्लासेंटा जो है बहुत ही जरूरी होता है। ओके, फॉर क्यों? तो प्लासेंटा इज ए स्पेशल टिश्यू। प्लासेंटा जो है एक स्पेशल टिश्यू होता है बाय मीन्स ऑफ विच एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। मां के ब्लड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन इसी प्लासेंटा से मिलता है। प्लासेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू by means of which embryo gets nutrition from mother's blood. embryo को न्यूट्रिशन उसके मां के ब्लड से मिलता है इसी प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा क्या है, why प्लासेंटा इज एसेंशियल? तो आंसर दैट इज फर्स्ट, प्लासेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू। प्लासेंटा इज स्पेशल टिश्यू, ये जनरल आउटलाइन हम बनाए हैं, नॉट कंप्लीट फिगर। प्लासेंटा इज ए स्पेशल टिश्यू by means of which embryo gets nutrition from the mother's blood, from the mother's blood. ओके, प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू है बाय मींस ऑफ विच एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। अब इसमें विल्ली प्रेजेंट होते हैं प्लासेंटा में। प्लासेंटा विल्ली जो प्रेजेंट होते हैं प्लासेंटा में वो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। प्लासेंटा में जो विल्ली प्रेजेंट होता है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो। ये जो प्लासेंटा है एक मीडियम बन जाता है, दैट इसमें बहुत सारे विल्ली होते हैं और ये विल्ली जो है प्लासेंटा मतलब लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो। मतलब कि ये विल्ली प्रेजेंट इन प्लासेंटा
ये villi present in placenta villi present in placenta provide large surface area जो प्लासेंटा में विल्ली होता है वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन to pass from the mother's blood to pass from the mother's blood to embryo. The mother's blood to embryo. Okay. तो प्लासेंटा में जो विल्ली होता है वो क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है लार्ज सरफेस एरिया. यू शुड नोट दैट, हम अभी बताएंगे. प्लासेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस, विल्ली प्रेजेंट इन प्लासेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को पास करने में काफी सहायक होते हैं. तो लार्ज सरफेस एरिया किसके लिए, फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रायो. और एम्ब्रायो से जो वेस्ट निकलता है और वेस्ट जनरेटेड बाय एम्ब्रायो इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दम टू मदर्स ब्लड. वहां से एम्ब्रायो से जो वेस्ट निकलते हैं वो मदर के ब्लड में ट्रांसफर करते हैं थ्रू प्लासेंटा. ओके, वेस्ट आर आल्सो ट्रांसफर्ड टू द मदर ब्लड थ्रू प्लासेंटा. आल्सो द वेस्ट जनरेटेड by the waste generated by the developing embryo is removed by transferring them into the mother's blood through placenta तो बच्चों, प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू है बाय मींस ऑफ विच एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन. प्लासेंटा इज ए स्पेशल टिश्यू बाय मींस ऑफ विच एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड. एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन उसकी मां के ब्लड से प्लासेंटा के थ्रू ही प्रोवाइड होता है. और प्लासेंटा में जो विल्ली प्रेजेंट होते हैं इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया. वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू एम्ब्रियो. ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मां के ब्लड से एम्ब्रियो तक लाता है. ये प्लासेंटा विल्ली प्रेजेंट होता है, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. ऑल्सो जो वेस्ट जनरेट होता है एम्ब्रियो के दौरान, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, देन क्या होता है कि इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड. ये वेस्ट कहां जाएंगे, मदर्स ब्लड में. कहां से, थ्रू प्लासेंटा. सो प्लासेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फॉइटल डेवलपमेंट. इसलिए प्लासेंटा जो है बहुत ही एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फॉइटल डेवलपमेंट. ओके, इसके बाद स्टेटमेंट, सो प्लासेंटा इज एसेंशियल फॉर फॉइटल डेवलपमेंट. इसके बाद के लिए सो प्लासेंटा, तो ये बात है. और सेकंड इज यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक. ये यूटेराइन लाइनिंग जो होता है वो थिक हो जाता है. जस्ट यूटेराइन लाइनिंग
Second is uterine lining become thick and spongy after fertilization. Now second, ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ा मोटी हो जाती है. दिस विल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी. यूट्रस लाइनिंग क्या होगा? यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर fertilization. This is uterus. This is ovary found in female, not in male. Ovary. This is ampulla of fallopian tube. This becomes fallopian tube. This is uterus. Triangle. This is uterus and this is cervix here and here is vagina. तो बच्चों यूटेराइन लाइनिंग कैसा हो जाता है? इट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. ये थिक और स्पॉन्जी हो जाता है. ओके, दिस बिकम्स यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. यूटेरस का जो लाइनिंग होगा कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस का लाइनिंग जो होता है वो थिक हो जाता है और स्पॉन्जी भी हो जाता है. थिक स्पॉन्जी मतलब हाईली वैस्कुलराइज्ड हो जाता है. ब्लड वेसल्स इसके चारों तरफ रहेंगे. और सो दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात होगी. यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन. सो तो यू हैव टू आल्सो प्रोवाइड रीजन फॉर दिस. इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा. यूटेराइन लाइनिंग क्यों थिक और स्पॉन्जी हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? द आंसर फॉर द सेकंड इज, रीजन फॉर द सेकंड, दैट इज, रीजन क्या है? यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक. यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक. लाइनिंग become thick, become thick after fertilization. After fertilization. After fertilization and is richly supplied and is richly supplied with blood to nourish, with richly supplied with blood to nourish embryo, developing embryo, to nourish the growing embryo, the growing embryo. Okay, uterine lining becomes thick and spongy. Thick or spongy becomes thick and spongy. Thick after fertilization and is richly supplied with blood vessels. ये चारों तरफ से क्या होंगे? ये थिक होने के साथ साथ richly supplied with blood vessels. ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो growing embryo है, the baby, the growing embryo here, the growing embryo को क्या करना पड़ता है? The growing embryo को नरिश करना पड़ता है. Here is placenta in between uterine wall and fetus के बीच यहाँ placenta, और ये नरिश करता है. So ये चूंकि richly supplied with blood vessels होता है and to nourish the developing embryo. Okay, growing embryo. इसलिए uterine lining thick हो जाता है, spongy हो जाता है after fertilization. Now second question. Second question is, फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चन में, इसलिए लेट इट बी लाइक दिस. अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन. यहां आपका सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? इज द
main difference main difference between sperms between sperms and egg of human and egg of human. Okay, egg of humans. Write the importance of this difference. Write the importance of this difference. Okay, तो बच्चों what is main difference between a sperm and egg and write it important. ये difference क्या importance रखता है? What type of difference importance does this difference? Uh, what is the importance of this type of difference? First question is what is main difference between a sperm and eggs? And इसके difference के लिए क्या होता है कि importance क्या है? ऐसे differences से क्या importance है? तो बच्चों sperm is a male gamete, human male gamete is your sperm, and human female gamete is ovum. Both are haploid. That is इसमें जो है haploid chromosome 23 chromosome in each. We have 46 chromosome in diploid condition. हम लोगों के पास diploid condition में diploid state में we have 46 chromosome and only gamete cells having the half number of diploid cells. That is n. तो इसमें क्या होता है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड गैमेट्स मेल और फीमेल के हैप्लॉइड गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट. फ्यूज करके वो जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट बाद में धीरे धीरे करके डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. और ये तो स्पर्म और ओवम के बीच जो है मेन डिफरेंस क्या है? तो बच्चों स्पर्म में you have two type of chromosome, that is X and Y. या तो sperm contain X और Y, लेकिन ovum contains only X, no Y. इस डिफरेंसेस से क्या होता है? इस डिफरेंसेस से क्या होता है कि help in determination of sex of a baby. ये डिफरेंस जो होगा वो बताएगा कि बेबी का सेक्स क्या है, आइदर मेल है या फीमेल है. तो मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम. चलिए आंसर. द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन डिफरेंस between a sperm and egg of human main difference between a sperm and egg of human is that a sperm has X or Y chromosome. A sperm has X or Y chromosome. स्पर्म में या तो X होगा या तो Y होगा, because this is your gamete. And but X has pair of X chromosome. X has pair of X chromosome. So मतलब X में क्या होंगे? पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स होंगे. तो ये क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन. मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग ऑफ ह्यूमन. द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग ऑफ ह्यूमन इज दैट ए स्पर्म हैज आइदर X और Y क्रोमोसोम. X और Y, यहां क्रोमोसोम लिख लीजिएगा. X और Y क्रोमोसोम, यहां क्रोमोसोम X और Y chromosome. But
X has a pair of X chromosome. X में क्या होता है? Pair of X. जैसे suppose this is your sperm. Sperm has tail, middle piece and nucleus. This is acrosome. तो sperm में या तो X होगा या sperm जो होगा वो Y क्रोमोसोम, या तो X या तो ये दो sperm है. देखिए sperm, दिस इज योर स्पर्म. स्पर्म या एक्स हो सकता है स्पर्म, या स्पर्म होंगे वाई. ओके, स्पर्म एक्स और वाई ये होगा. लेकिन ओवम क्या होगा? ओवम विल बी प्योर, ये एक्स, केवल एक्स होंगे. ओवम कंटेन्स ओनली एक्स. ओवम में क्या होगा? केवल एक्स ही होता है. और इस डिफरेंस के पीछे व्हाट इज इंपॉर्टेंस है कि दिस डिफरेंसेस हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड. दिस डिफरेंस हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ओके, तो बच्चों मेल में या तो होगा स्पर्म में एक्स या फिर वाई, लेकिन एक्स पेयर ऑफ एक्स, मतलब एक्स हैज एक्स जो होंगे, बट एग हैज पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. एक केवल एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं. ओके, अब यहां पर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस, द इंपॉर्टेंस X have only X chromosome, has only X chromosome. Okay, the importance of this difference is the difference helps in the determination. The differences helps in determination of sex of a person. Sex of a person and maintaining genetic continuity of an organism, and maintaining genetic continuity of making genetic continuity of in the organism.